in a big statement, the RSS chief has said that it does not train its cadre to use the lathis or sticks for fighting or for public display, but it is to instill bravery and teaching one to be steadfast. Mohan Bhagwat saying that a person who wields a lathi develops Veer Vritti, which is a sense of bravery, and he is not afraid. And the lathi training teaches steadfastness in crisis and inspires one to walk on the path of resolve, patience and unwavering strength. Now, while Bhagwat clarified about the lathi training, the opposition was quick to politicize the move. The India bloc has claimed a tug-of-war between the BJP and the RSS. In fact, the opposition has asked, who is the RSS sending this message to, the Prime Minister or the Home Minister? दंड सीखते हैं तो लाठी काठी का प्रदर्शन करने के लिए नहीं सीखते या झगड़ा करने के लिए नहीं सीखते। सीख गए तो दोनों प्रसंग आ गए तो काम में आती है, प्रदर्शन में भी आती है, निदर्शन में भी आती है। लेकिन प्रदर्शन हमको उत्सव में करना ही पड़ता है और झगड़ा बने तक हम करते नहीं। अब कोई आके हम पर गिर गया तो इलाज नहीं। परंतु लाठी हम इसके लिए नहीं सीखते, लाठी इसलिए सीखते हैं कि लाठी चला सकने वाले मनुष्य को वीर वृत्ति प्राप्त होती है, वो डरता नहीं है। मोदी जी को धमका रहे हैं, अमित शाह को हमें नहीं मालूम किसको ये कहकर डराया जा रहा है। आपस में इनके झगड़े चलते रहते हैं, चलने दीजिए। ये नूरा कुश्ती है, हकीकत है, हमें नहीं मालूम। जिसको डरना है वो भाजपा में वो डरे। मोहन भागवत जी पिछले कुछ समय से बहुत सी बातें कह रहे हैं, लेकिन उन बातों को मान कौन रहा है। मोहन भागवत जी ने कहा कि एक धर्म स्थल के नीचे दूसरा धर्म स्थल क्यों ढूंढना, तो कोई सुन रहा है, आखिर उनकी बात को कौन मान रहा है। उनकी इस बात का भाजपा के दल और दूसरे संगठन में ही विरोध है, उनकी इस बात को लेके। और अब जब वो लाठी की बात करते कि मैं परीक्षण किसी और कारण से दे रहा हूं, तो सवाल ये है कि परीक्षण देने के बाद क्या जिनको परीक्षण दिया जा रहा है वो आरएसएस की विचारधारा के समर्थक हैं, मोहन भागवत जी की बात को मानते हैं, उस विचारधारा को मानते हैं, या वो निकल के कुछ और काम करते हैं। My colleague Rishabh is on the broadcast with us. So Rishabh, the RSS chief clarifying on the lathi training for the RSS cadre, but clearly the opposition has chosen to see it in a certain way, claiming it's a dig for the BJP. Well, definitely, Mohan Bhagwat, the chief of Rashtriya Swayamsevak Sangh, whenever there's a statement coming in from the RSS chief, opposition is trying to corner the government, and especially the top two leaders of the government, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, using the statements of Mohan Bhagwat, be it from the consecration of the Ram Temple in Ayodhya in last January, or for that matter, Mohan Bhagwat's statement on the eve of Independence Day, or for that matter his Dussehra address as well. Congress has always been quick to connect his warnings with Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah. Here also we heard Pawan Kheda, where he very categorically said that there is a Noora Kushti, a friendly fight between BJP and RSS, and RSS time and again keeps warning Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah to keep both of them in check, and this is something that has been maintained by Congress for quite some time. Yet again, once Mohan Bhagwat clarified on the lathi practice by RSS members, Pawan Kheda was quick enough to connect it again with Home Minister and Prime Minister, saying that this is a warning for them. We don't have to do anything with it. Okay, all right. So, Rishabh, what was the context of the RSS chief's statement when he issued that statement about the training for the RSS cadre? Well, in what RSS or what BJP is taking a leaf out of this address, it's more of to boost confidence in the cadre. Politics aside, RSS is a long-standing organization founded in 1925, and since then there have
been a strong cadre hold of RSS nationwide, from Kerala to Kashmir. We have seen that RSS has a strong hold in past few years. The politicization of RSS has made it look more political, and especially in last 10-12 years, the way RSS have been attacked by the Congress or the opposition party from the floor of the House and Parliament as well. There is a sense in the leadership of RSS that the cadre is turning more political, and in a way this was as per RSS members who are privy to what Mohan Bhagwat feels, this was in a way a bit to boost more confidence and more discipline in the RSS cadre rather than any political move. Okay, all right, Rishabh, stay with us. Like you mentioned, this has led to a lot of political reactions coming in, the opposition choosing to see it a certain way. Listen in. मोहन भागवत जी की आजकल बात कौन मान रहा है? मोहन भागवत जी तो कह रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर मत खोजो, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, उनके अनुसांगिक संगठन खुद ही लाठी लेकर के उनके ऊपर जुट पड़े हैं। कोई वाणी के लाठी का इस्तेमाल मोहन भागवत जी के ऊपर कर रहा है, तो मोहन भागवत जी पहले अपने ऊपर पड़ने वाली लाठियों को बचाइए, लाठी तंत्र की बात बाद में कीजिएगा।